Hello Padaku. Again we are here to understand few more topics of the same lesson matter in our surroundings. Today the first topic is latent heat. What is latent heat? The heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. Latent heat does not raise the temperature. Means if we are changing the state of any substance, then we provide the heat. The amount of heat will not increase till it will remain in the same form. So we can say latent heat has always to be supplied to change the state of a substance. किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जो ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है वो उसकी latent heat कहलाती है. Why latent heat does not cause a rise in temperature of the substance we will understand here. And just to understand this we will perform an activity. Before to proceed, we must understand one thing. Latent heat is of two types. Number one, latent heat of fusion, and number two, latent heat of vaporization. First of all, we will understand latent heat of fusion. Means when we are changing the state of solid into liquid. Here one apparatus is required which I have shown here on the screen. So in this we have used one stand, one thermometer, thread, stirrer, one beaker, and some ice, one burner, one stand, and one wire gauze. It's enough. We'll place the beaker on the stand over which the wire gauze is kept. उसमें हम थोड़ी सी आइस रख लेंगे और स्टिरर डाल देंगे. एक स्टैंड जिसकी मदद से हम एक थर्मामीटर लगा देते हैं और वो थर्मामीटर बॉटम को टच नहीं करना चाहिए. इट शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ द बीकर. इट इज़ हैंगिंग देयर. और इसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं. When we light the burner, जब हम बर्नर को जला देते हैं, what do we see? जब तक ये बर्नर की हीट इस आइस को मिलती रहती है और ये आइस पिघलना शुरू होती है और हम यहाँ पर इस आइस का टेम्परेचर नोट कर लेते हैं विच इज़ 0 डिग्री. और ये 0 डिग्री तब तक बना रहता है जब तक कि आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती. It will not change. It will remain 0 degree. So this shows that there is no rise in temperature during the melting of ice. And after that, when the ice has melted, the temperature of water starts rising. मीन्स जैसे ही वो पिघल जाता है वैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है. द हीट विच इज़ गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. एंड द सेम एनर्जी इज कॉल्ड latent heat of fusion of ice. So we can say the latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of solid to liquid without any change in temperature. The latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 to the power 5 joules per kilogram. Now to understand the latent heat of vaporization means liquid to gas change, we require the same kind of apparatus. Simply here we are using water on the place of ice. When we put water this time, the same thing happens. जब तक कि पानी भाप बनकर उड़ना शुरू होता है तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री रहेगा और जैसे ही ये
खत्म होता है वह तभी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर या नीचे होगा. We can say the latent heat of vaporization of water is 22.5 into 10 to power 5 joules per kilogram. The heat energy supplied to a boiling liquid is used up in changing the state of a liquid substance by overcoming the force of attraction between its particles. Why the temperature of boiling water does not rise even though heat is being given continuously? ऐसा क्यों होता है? ये पानी का तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम जानते हैं पानी एक लिक्विड सब्सटेंस है और जो इसके पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे एक फोर्स की वजह से आपस से जुड़े हुए हैं और ये जो हम हीट दे रहे हैं ये हीट इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उन पार्टिकल्स को अलग कर पाए और वो गैस के फॉर्म में आ पाए. इस वजह से इस पानी का तापमान ऊपर नहीं बढ़ने पाता. Hence, no rise in temperature takes place during the boiling of water. When water changes into steam, it absorbs latent heat. But when steam condenses to form water, an equal amount of latent heat is given out. That's why the burns caused by steam are much more severe than those caused by boiling water. Though both of them are at the same temperature of 100 degrees Celsius. This is due to the fact that steam contains more heat in the form of latent heat than boiling water. So, पढ़ाकुओं, today we have understood the latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Rest of the topics we will understand in the very next video. By the meantime, take care of yourself, but do not forget to like the video and subscribe the channel. Goodbye.